सो सोम्बल और मैं जो है वो इंट्रोडक्शन करा रहे थे अपना, सो आप जी, भी अस्सलाम बता वालेकुम दें। नीलोफर। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, Okay, we still cannot hear right. you. So, okay. Good afternoon and assalamu alaikum, everyone. जी, वालेकुम अस्सलाम। So, okay, right. Welcome to this session where we will be talking about the digital marketing strategies. My name is Sumbul Mandi, and I am a business management and education leader. And I have with me a very diverse panel of very in industry professional people, and I have with me, I'm going to start off with their introduction. So thank you so much for joining us, Mr. Hamad Latif. Hamad Latif Saab jo hai, he has a range of experiences. He's a CEO founder of HLC Consultants, and we will talk about more about his experiences. We also have with us today Ms. Nilofer Daisy, and as I understand, you are an HR VP Associate Director, and I believe a lot of diverse experience in the HR field as well. We'll have some more guests joining us in a little while as well, and we'll come to their introductions as we go along. A little bit about today's session. So आज हम बात करेंगे digital marketing strategies की. It's an upcoming and rapidly increasingly bigger field in Pakistan and internationally as well. So, or especially I think in the last 2-3 years, post COVID, post pandemic, सारे businesses जो हैं वो उनको ये realize हुआ that this is such a vast world जहाँ पे digital market and digital media की जो है वो एकदम से boom आई है. So, and it's a very relevant topic, especially in terms of creating employable scope in Pakistan. So we'll talk about a little bit in terms of the value of the digital marketing, the scope that is here in Pakistan, global उसका जो है किस तरह का the bigger picture, और उसमें हम जो value add कर रहे हैं in terms of training platforms, in terms of the ability to generate business from this, and how do we tap into some untapped areas as well. And I will look at you as employers as well. थोड़ी सी हम बात करेंगे कि employers के point of view से skills gap कहाँ पे है, and what is it that we can tap into. I have with me Farooq Sohail Saab as well. So welcome, Assalamu alaikum. We've just started. I will. So Farooq Saab is the head of cloud services and I believe NetSol Technologies. So that's correct. So thank you so much for joining us. I was just giving an introduction about कि हम आज क्या बात कर रहे हैं और digital marketing strategies and the immense that this area, especially in Pakistan's context. Okay. So I think I'll open up the floor by asking कि digital marketing success जो है, how do we see that at present in Pakistan? Do you see that digital marketing has actually been a successful platform for businesses, public and private? Hamad, I think I'll start with you. आपके तरफ आते हैं, आप मुझे बताइएगा, what is your take on this? So thank you Shumbal for handing me over. So मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया फुल टाइम, सो और आई डिड अ मिस्टेक जो अब मैं देखता हूँ बहुत सारे फाउंडर्स वो भी कर रहे हैं, खासतौर पे मेरी फील्ड के अंदर, और वो मिस्टेक ये थी कि आई अज्यूम्ड कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड स्किल्स पीपल शुड कम टू मी एंड आस्क फॉर डिफरेंट सर्विसेज, बट ऑब्वियसली how should I expect someone to come to me asking for services जब तक मैं उसको जाके ये बताता नहीं हूँ कि I am actually providing these services. तो so when I realized this कि अच्छा ये तो obviously खुद से कोई नहीं आएगा मेरे पास, and I started from my circle. तो अपने रेफरेंसेस को और सर्कल को बताना शुरू किया कि अच्छा ये सर्विसेज मैं दे रहा हूँ. अच्छा, उसके अंदर भी कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं था. जो बहुत अच्छा फीडबैक हमें और रिस्पांस मिला है HLC को एज अ फर्म, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से मिला है. और
this is something I did not know until I started this. इतना अच्छा response मिला है कि people have started approaching us from different countries, Kuwait से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान के अंदर भी, दूसरे सिटीज से, कराची से. सो लोग खुद अप्रोच करना शुरू हो गए हैं फॉर कोलैबोरेशंस भी, फॉर पार्टनरशिप्स भी, लीड्स भी आ रही हैं, बिजनेस भी आ रहा है, एंड दिस इज जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं. तो डेफिनेटली यू और आपको कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस जो है वो ऑनलाइन मेंटेन करनी है. और अब हम जो वी आल्सो कंसल्ट स्टार्टअप्स, तो अब हम जो उनको गाइड करते हैं वो हम ये करते हैं कि यू हैव टू establish your legal presence and you also have to establish your online presence. क्योंकि अब आज, बल्कि आज नहीं, बहुत अरसा पहले से आप जो पहला काम करते हैं whenever you want to start a business relationship with anyone, वो इंडिविजुअल है या बिजनेस है, सो आप सबसे पहले यू लुक देम अप ऑनलाइन, और उनकी क्या एक्टिविटी चल रही है ऑनलाइन, वो क्या कर रहे हैं. सो दिस इज डेफिनेटली, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कहें कि दिस इज अ गुड टू हैव. अब 2023 में तो दिस इज अ मस्ट टू हैव है. बिल्कुल ठीक है. Absolutely, you're exactly on point कि it's something which is now imperative, which is now inbuilt, और इसके ऊपर और बहुत सारे, this is basically becoming a foundation, and then उसके ऊपर I think a lot of business structures and logistics rely on this now. जी जी. Farouk साहब, I would like to add one more thing. So I was listening to this clip of Steve Jobs, और उसने उसने अपना एक एनालिसिस किया हुआ था कि यूएस की जो कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज जो हैं, वो दे फोकस लॉट ऑन मार्केटिंग, और बहुत अच्छी टॉप नॉच मार्केटिंग करते हैं. बट जापानीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं करते. स्टिल कस्टमर्स जो है मार्केट में वो क्वालिटी रेट करता है ना, वो जापानीज प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा करता है. और जो उसका उसका कंक्लूजन था, और रियलिटी में है भी ऐसे ही, वो ये था कि पीपल रेट क्वालिटी बेस्ड ऑन योर सर्विस एंड योर डिलीवरी, नॉट बेस्ड ऑन योर मार्केटिंग. तो पॉइंट इज कि आपके पास प्रोडक्ट सॉलिड है, और आपकी मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए. खाली मार्केटिंग से भी कुछ नहीं होने लगा. यू नीड टू हैव समथिंग विच यू कैन डिलीवर. आपका जो प्रॉमिस है वो आप डिलीवर भी कर सकें. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. मैं कुछ स्टार्ट्स बल्कि देख रहे थे a few weeks ago, I think they're pretty recent, कि जो डिजिटल मार्केट का जो रेवेन्यू है in 2023, that is about $630 million US. ये पाकिस्तान की बात हो रही है. And then it is expected to go to up to about 900 million US in the next 5 years alone. और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो वैल्यू ऐड हो रही है वो ये कि जस्ट इन द लास्ट 1 year आपके पास तकरीबन 4.5 मिलियन न्यू इंटरनेट यूजर्स साइन अप हुए हैं इन जस्ट द 1 year अलोन, 2022 से लेकर 2023 तक. एंड दिस इज अगेन पोस्ट पैंडेमिक. सो फरूक साहब, ब्रिंगिंग दैट टुवर्ड्स यू, आपका जो एक्सपीरियंस है being in I think one of the biggest tech organizations in Pakistan, how do you feel कि हमारी जो digital marketing approach है, और अभी हम where are we now becoming that innovative as the rest of the world, या अभी हम थोड़ा traditional model पे ही चल रहे हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा इशू ये है कि डिजायर तो आई थिंक इस्टेब्लिश हो गई है कि डिजिटल मार्केटिंग के बगैर जो है ग्लोबली प्रोडक्ट सेल करना और सर्विस सेल करना वो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. अब दूसरा जो उसकी, अब आई थिंक वी आर एट द ओवरऑल एट द सेकंड स्टेज कि कौन सही तरीके से आपको गाइड कर रहा है स्टेप बाय स्टेप वे, द राइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, सोशल मीडिया को कैसे अप्रोच करें. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जैसे बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स, राइट, फ्रॉम सोशल मीडिया टू कंटेंट टू ईमेल टू वेब टू एसईओ, अ लॉट, राइट. और इसमें जो एक्सपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है वो ऐसी नहीं है कि हमें कुछ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स ऐसे मिले जो कि ग्लोबल एक्सपीरियंस के लेकर पाकिस्तान में आ रहे हों और फिर देन दे क्रिएटिंग द स्किल्स. वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो वाली स्ट्रेटजी पे लोग चलते हैं. पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक, ठीक है, बट हाउ टू डू इट, व्हाट टू स्पेंड मनी ऑन, आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है दैट दे नीड आंसर्स. प्लस देन एनालिटिक्स सेकंड पार्ट है कि रिटर्न्स क्या मिल रहा है. एवरीबडी वांट्स टू नो कि सोशल मीडिया पे आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, सो यू नो एज टू व्हाट यू आर गेटिंग, राइट लतीफ साहब.
So you know कि अच्छा if when I started digital marketing on social media तो returns आना शुरू हुए, results आना शुरू हुए, connection establish करना शुरू हुए. But the second phase is where do we see कि जो value है different platforms पे advertisement की, content create करने की, engagement की, वो है क्या? So अभी दो gaps हैं I think बहुत बड़े, और हर कोई experiment करके सीख रहा है, and that is I think where the gap is mostly. But in terms of recognition, तो I think अब आप recognition तो I think हर organization के अंदर है, चाहे वो local है या वो global है, कि digital marketing is the way to go. उसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि दो राय है. बिल्कुल ऐसे. But आपका what do you see? हमारा जो your perspective, are we becoming more innovative? देखिए innovation तो हो गई भी है, right? So the platforms that you go to for like LinkedIn या Facebook, even don't underestimate TikTok nowadays for a lot of set of products, right? आजकल तो ये भी कहा जाता है if your product and pages are not or Instagram, right? So people with understanding of all these platforms, I think वो gap है. Innovation तो मेरे ख्याल में कि already exist करती है digital marketing की point of view से काफी अरसे से. I think for a very very long time banner ads की सूरत में exist करती थी, फिर social media platform आ गए उसकी सूरत में exist करती है. I don't think so. It is the innovation time right now. It is what is the right approach and right spend and right strategy and right skills time. हमने इन innovations को इन platforms को utilize करना है. I think that is where we are. Okay, absolutely. Thank you so much. And I think इसकी एक positive, you have to have a positive takeaway. The pandemic a positive takeaway, especially for countries like Pakistan, has been that thrust and that springboard into using technology and using digital platforms. Nilofer, I'm going to bring the conversation to you. Aapka background and you have a lot of experience dealing with from the HR perspective, from developing the human resource and developing the capable people, professionals as well. So do you think looking at the scope of digital marketing professionals and individuals and organizations both, अभी हमारे पास where do we stand in terms of having such platforms that are creating, जैसे फारूक साहब कह रहे थे कि you don't have CMOs coming from international experience जिनके साथ आप you would be able to maybe utilize to widen that reach. So within Pakistan, where do we stand in terms of opportunities? So, Sumbul, thank you so much for having me on the show. It's been a privilege to share the platform with this esteemed panelist. Emphasizing the importance of digital marketing, I think digital marketing is of grave importance nowadays because in today's age of digital marketing, having a strong online presence is essential for both businesses to reach their target audience as well as HR. This is where digital marketing in Pakistan comes when you are when you are about to pitch a new product into market or whatever you are looking for a new candidate who is internationally based somewhere, or where when you want to hire a tech talent somewhere across Pakistan or all over the world from. So digital marketing is all there. When I talk about the recruitment and the importance of digital marketing in Pakistan, I would emphasize that employees come to you when they know about your company. And if you do not brand your company amongst the top notch recruiters and the service providers, I mean, why would employee come to you? And the very prominent platform to promote your company is through digital platforms. I mean, gone are the days when the companies would practice one marketing or the traditional marketing strategies. So even for the company's introduction and for your company's presence and for the employees and the recruiters to know that where you are coming from, आपके employees कहाँ से आ रहे हैं, where are they based in the world and on which part of the world, I think it's of grave importance that companies should have significant presence on their different social media handles. And especially when I talk about recruitment, I mean, LinkedIn is my most favorite. I mean, to get one marketing and to get direct recruitment from LinkedIn rather to hire a job monster or go through a third party, I think digital marketing is of significance importance even when you're hiring the right candidate. So when I talk about the importance of digital marketing, I think it is of grave importance because digital marketing increases your company's visibility and your personal visibility as well. When you're into personal branding, you have to introduce certain sort of
attributes about yourself on digital marketing platforms, or gone are the days when we are sifting the resumes and getting the candidates from them. Because by promoting your business online, you can reach a wider audience and increase your visibility. Same goes for targeted marketing. When we go talk about targeted marketing, when I talk about my company, we deal with background screening and employment verification. So I have to look at which company. I mean, almost all the companies and their HR are looking forward to have their employees' background checks done. So, what is our target market, and how can I target it through social media? Digital marketing allows you to target specific demographics, not only the interest, but on the basis of the behavior as well, and which can improve the effectiveness of your marketing campaigns online. So it's cost effective as well, because compared to the traditional marketing methods, digital marketing is generally more cost effective and allows far better tracking and analysis of your marketing efforts. So all in all, I would sum it up by saying that digital marketing, not only from the media marketing perspective, but also from HR, is of grave importance, because we're looking for the right talent through these digital platforms. And employees are branding their own selves through digital marketing as well. As you can see, the branding, self branding on LinkedIn, if you get my point. So I would say it's of grave importance, and through digital marketing, not only can you get the target audience, but employers can find the right talent, and employees can definitely brand themselves in a regular platform. I mean, they get more prominent by showcasing their talents online. Okay. Absolutely, Nilofer. Agree with all of those points, very valid ones. The job hunting, screening, and recruitment processes, of course, benefited a lot with the digital strategies for organizations to be able to market themselves and connect with the employee base as well. But Mira, thoda sa, I'm going to have you focus a little bit more on the fact that, okay, if I want to be a digital marketer, do I have enough opportunities within, again, looking at the local versus the global landscape as well? Pakistan ki agar hum baat ye kare, because again, I understand that we want to focus on what we are looking at in-house. So do you think somebody who is getting into this profession to become a skilled employee, do we have enough platforms at the moment? What do you think of the availability of that training and development platforms for digital marketers? This is the question for me. G, please, you can go ahead, and then I'll actually have everybody's input in that as well, because that I think is a very crucial element. कि हम train कर रहे हैं लोगों को on digital marketing, आप strategies पे तो बाद में आते हैं ना, because do you actually have the human resource? So your take from as a human resource expert. So the thing is that it needs proper training to deploy your products on social media. I have come across a few organizations who are practically, enabling their female staff to promote their brands and services through Rawalpindi College, Commerce Industry and Islamabad Chamber of Commerce, to digitize their products online. Enablers is one of the examples that I've come across, because I was invited as a panelist at their platform as well. So far, I have seen a great initiative at their end, that they're training and training their employees, sort of underprivileged women who can market their products at that relevant platform, gauging that how can they engage social media clients and how can they promote their products on social media. So I've come across one training academy, that is Enablers Pakistan, that's also located in my vicinity of my business building. When I talk about myself, I definitely, because I can talk about capital management and human resource management, I think it's very important to personally brand yourself on LinkedIn, and not all the employees. So that's why where we come in, and not all the employees can personally brand themselves as as wise as others do, because there are certain sort of skills needed for that. Definitely there are training programs that are required for that, and I don't think so we do have adequate trainings at the moment for enabling or masses to market not only themselves but their product on social media. It's a need of the hour. So I'll add to it, and my addition would be that opportunities are immense, right? I think every type of organization
with a product or services looking for that. Whether they were trying to market to a set of customers or to future employees, to anyone, right? So the targets of marketing could be different. In terms of opportunity is immense. I mean, global as well, local and global both, because of all these platforms like Upwork and Fiverr and all of these. So this is something which is the skill is needed globally, and then now our guys have access to the global markets as well. In terms of training, I do not think anybody is specifically trained, coming in trained uh, to become a successful digital marketing leader, right? So that's the first role, as to people who know as leads as to what digital marketing is, right? So it's not one thing, it's not one dimension, there are multiple dimensions, right? So I think we only have very good training institutes in maybe creative side of content, right? But on execution on different platforms with different objectives, I think we are falling behind a lot overall, and there's absolutely no training institute that covers end to end on that. Everybody is learning on their own. People usually are actually gaining that knowledge in innovative organizations and training more juniors along with them based on the first ones are learning based on their mistakes, and the second ones will gain from that experience. That's the model the industry, I think, is following right now. Okay. But I think there's a lot of scope. Then that actually leaves a lot of big gap for institutions to actually, or maybe Huge. even employers to pair up with institutions to deliver those trainings. Ji. As I said Absolutely. at the start, बात कर रहे थे, because my role is two pronged. I am part of the business management community as well as a corporate, but I'm also an academic person as well. So we are working on skills-based education as well in Pakistan. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, and shorter courses, because I think there's a big shift now. It's not about detailed academic qualification. It's about कि आपको skills क्या. And I think in the last 2 years, I have seen that the number of young people within, अगर मैं सिर्फ बहुत छोटे scope की बात करूँ, within Islamabad and Rawalpindi, just the twin cities, there has been such a big demand of young learners who want to understand digital marketing skills, so they can be freelancers. They can start picking up freelance work internationally, and they are doing that. जैसे आप बात करते थे, I think independently और खुद ही learning as we go along and through experience ज़्यादा है. That's true. What do you think? Sorry, Gigi, so I have been listening to all of the comments from your side, and I've been waiting to actually answer these questions. So दो questions आपने पूछे, एक आपने opportunities का पूछा और एक आपने training institutes का पूछा. अच्छा, so अगर हम opportunities की बात करें ना, so I've worked in both manufacturing concerns and service industry. जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो एक आईटी सेक्टर है, विद इन सर्विस इंडस्ट्री जो एक आईटी सेक्टर की नीश है, टेक सेक्टर की, they are the people who are more closer to technology, and obviously because of that more closer to digital marketing, and they understand कि उसके क्या impacts हैं. So basically उनके लिए उसकी वैल्यू है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कि वो उसको वैल्यू कर रहे हैं इस डिजिटल मार्केटिंग को, उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हैं. अच्छा, सो इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में स्टिल अभी तक इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि मतलब नॉट टू दैट एक्सटेंट. दे अंडरस्टैंड कि येस दिस इज नीडेड, बट उतनी वैल्यू नहीं है उनके पास उस चीज़ की. सो यू वॉन्ट सी, सो अगर आप कंपैरिजन करें जो सर्विस सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसके ऊपर, खास तौर पे जो आईटी सेक्टर है डिजिटल मार्केटिंग पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी उतनी नहीं कर रहा. अच्छा, और फिर एक सेक्टर है जिसके अंदर जो भी नीलोफर भी बात कर रही थी, एक्सट्रीम कॉमर्स और नेबर्स की. सो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने और अगर हम इंस्टीट्यूट्स की भी बात करते हैं, सो दे हैव एक्चुअली बिकम इंस्टीट्यूट्स नाउ, एंड दे आर ट्रेनिंग पीपल फॉर ई कॉमर्स. और
आई नो अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जो इनके स्टूडेंट्स थे और वो अब अपनी सक्सेसफुल ई कॉमर्स फर्म्स रन कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान. और वो यहीं से सीखे पढ़े हुए हैं और and they are also providing trainings to other, so this is a ripple effect for this thing. So ये वाला जो एक पार्ट है हमारा ई कॉमर्स का, उसके अंदर ऑब्वियसली मार्केट के अंदर गैप था बहुत बड़ा और टैलेंट भी था पाकिस्तान में और एंड पीपल वर रेडी फॉर दिस, और उनको जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने सिखाना शुरू किया और so people have grabbed onto this opportunity और बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स शुरू कर दिया. एंड यू वुडंट बिलीव कि कुछ एरियाज ऐसे भी हैं हमारे जहाँ पे जिन लोगों के पास कोई प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, घर नहीं है उनके अपने, ठीक है, और एंड दे आर डूइंग ई कॉमर्स, विलेजेस में रहते हुए. सो ये तो ये है. अच्छा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स किसी हद तक हैं. अच्छा, जैसे अभी फरूख बात कर रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर डिजिटल मार्केटिंग. उसके अंदर आपके पास सोशल मीडिया है, फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने क्या कहते हैं प्रमोशनल मटेरियल्स या प्रमोशनल प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रहे हैं. फिर सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएशन आजकल बहुत ज़्यादा इन है. देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स और वो बेसिकली दे आर डूइंग बिजनेस और वो फ्री कंटेंट दे के अबाउट सम सर्विस और सम प्रोडक्ट और वो अपनी ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं. इसी तरह फिर ईमेल मार्केटिंग है, फिर आपके पास पेड कैंपेन्स हैं, देन यू हैव कोल्ड कॉलिंग, देन यू हैव लिंक्डइन आउटरीच, सो लॉट्स ऑफ एवेन्यूज. अच्छा, फिर अब पेड मार्केटिंग के इधर भी देखें तो लिंक्डइन की अपनी एक डायनामिक्स होगी, फेसबुक एड्स की कैंपेन मैनेज करने की अपनी एक डायनामिक्स होगी. सो आई डोंट थिंक दे कैन बी ए सिंगल इंस्टीट्यूट जो ये आपको सारा कुछ सिखा सकता हो. मे बी सम डे कम्स अप विद समथिंग कि वो आपको कहेगा जी आप हर चीज़ के मास्टर होते हैं. और ऑर्गेनाइजेशंस को भी मेरा ख्याल ना हर एक के पास इतनी इन्वेस्टमेंट और बजट्स हैं और ना इतना टाइम है कि आप हर जगह के ऊपर जो है ना वो पूरी एग्रेशन के साथ अपने डिजिटल मार्केटिंग और कैंपेन्स कर रहे हो. So you usually go with few things. So you go with social media and say paid campaigns, or you would go with calling. So आपने यहाँ कॉल सेंटर्स बनाए होंगे अपने, या आप लिंक्डइन के ऊपर आउटरीच कर रहे होंगे. सो यू यूजुअली फोकस ऑन वन पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ी दुनिया है. बाकी जो सीखने की बात है, एक तो मेरा हमेशा से गिला रहा है बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ. इतनी पुअर क्वालिटी का कैंडिडेट प्रोड्यूस कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़, और एंड वी ऑल सी के यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे क्या कर रहे हैं. अब इट्स नॉट अ टॉपिक बट द रीज़न स्किल्स गैप क्यों इतना बड़ा है. हम देख रहे होते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर, और सॉरी लिंक्डइन पे नहीं, ट्विटर पे और फेसबुक पे और टिकटॉक के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे किस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं और वो किस क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका कंटेंट की टाइप क्या है. और तो उन्होंने जो स्किल्स हैं वो कहाँ पे सीखनी है. यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो अनफॉर्चुनेटली देयर टोटल फोकस इज बिजनेस. बच्चों की एजुकेशन के ऊपर तो देयर इज़ अ वेरी लिटिल फोकस जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनका. बाकी बच्चे खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं. सो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास लर्निंग की बहुत ज़्यादा हैं. इतना ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर. पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर भी लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसी तरह यू हैव कोर्सेरा, यू हैव मेनी edX. प्लेटफॉर्म, डिजी स्किल्स है. तो अगर आप सीखना चाहें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. फिर से ना बहुत सारे और फिर डिजिटल मार्केटिंग में आई थिंक मार्केटिंग कैंपेन्स को मैनेज करने के अलावा देयर इज अ बिग एलिमेंट टू डिजाइंस एंड वीडियो एडिटिंग. वो दैट इज वो एक खुद एक दुनिया है. सो एनीवेज दिस इज फ्रॉम माय साइड. आई थिंक अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं भी हैं पाकिस्तान के अंदर, सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली, जैसे फरूख मेंशन कर रहे थे. और लर्निंग की अगर हम बात करते हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अगर नहीं करवा रहे, सो लॉट्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल. इफ समबडी वांट्स टू लर्न, सो वो ही कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री. आपके पहली बात तो जो है वो आई विल एंडोर्स दैट कंप्लीटली कि आपने बात की, एंड आई कैन टेल दैट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस दोनों तरह से, एज एन एम्प्लॉयर एंड एज अ ट्रेनर. व्हेन वी से डिजिटल मार्केटिंग,
it's a couple of words, लेकिन जब आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं. You've got search engine optimization, आपने content writing की बात की, you have social media marketing, you have content creation as well, then you have the ability to reach out to people, you have campaigns, digital campaigns हैं, उसमें आपके पास pay per click की expertise है, because as I said मेरे पास अपनी एक in-house digital marketing team है जो ग्रो करते करते जो है वो 2 लोगों से लेके अब शायद मेरा ख्याल है 15-18 लोग सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग टीम की मैं बात करूँ. जस्ट गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल. एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दोस पीपल, I think I can say with absolute certainty that 8 out of 10 people are self-taught. जो आप बात कर रहे हैं कोर्सेरा से कोर्सेज किए, ग्राफिक डिजाइनर है वो, या कंटेंट राइटर है, या कंटेंट क्रिएटर है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो उन सब ने ट्रायल एंड एरर से सीखी है. A lot of them in Pakistan, and they're still doing a very very tremendous amount of good work. So of course बहुत बड़ी फील्ड है. There is so much scope. मैंने आपको शुरू में नंबर्स की बात की थी कि रेवेन्यू कितना पाकिस्तान में जनरेट हो रहा है, कितना हो सकता है. So उस पे तो of course there is no, I think, disagreement there. दूसरी बात, आई थिंक आपने जो जिस पे बात, आई जस्ट मूव ऑन टू the rest of the topics for today. Ecosystem, of course, is the first thing. You talked about the universities और उनके skills gap और सारा कुछ. I think वो एक collaboration से बनेगा. It has to be an academia, industry and private public collaborations की तरफ हमें जाना पड़ेगा. फारूक साहब, over to you. जी, बस एक सिर्फ मैं पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पे, वो ये है कि मकसद ये है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये नहीं सिखाना कि इंडिविजुअल टूल कैसे यूज करने हैं, बट एवेन्यूज के बारे में और नए एवेन्यूज के बारे में एनालिटिक्स से जज करना कि व्हाट इज द राइट पाथ फॉर you or your organization services marketing, what we call digital marketing strategy. Without digital marketing, I mean, there are so there are tactical things and there are strategic things. So strategically, you need to decide as to what I am going to do as part of my digital marketing strategy. और इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, वो ये है कि when customer you start to engage the customer, where are you keeping that data, right? The CRM plays a big role. So हम छोटे एवेन्यूज के ऊपर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, बट वी डू नॉट हैव दैट लीडरशिप हु सेज यू हैव टू डू these 10 things, right? Together in this sequence, in this order, with this spend divided between all these avenues. And if you're doing content management, so we do content creation intermittently. उसका किस पे कितना असर पड़ता है, कंटेंट आपका नहीं आता है, एंगेजिंग नहीं है, वगैरह वगैरह. Nobody is looking at the holistic picture. So the bigger, larger institutes have to create those strategists, like digital marketing strategists, who understand all those things. And then there are executors, like the junior guys, who could learn all these different tools and technologies, maybe on their own right now or through online courses, right? So I think इन दोनों को combination होना बड़ा जरूरी है. Absolutely, very rightly said. Okay, that brings me to another. मैं इसमें सुम्बुल मैं इसमें ऐड करूंगी कि I mean I would just I apologize for interruption, but No worries, go ahead. I would want to emphasize my point of view in this, that what I mean, the latest digital marketing trends and technologies in Pakistan that could be cost effective. मेरी तरफ से इस पे फीडबैक ये है अपने जनरेशन को, माय कोलीग्स को भी, कि वीडियो मार्केटिंग पे फोकस करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे करें. The use of video content such as live streams and short form videos to engage with the audiences is very effective nowadays, and people short videos को लोग देखना भी पसंद करते हैं. फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आए तो collaboration with influencers on social media platforms to promote products and services. I mean, the masses or lot can do that. I mean, the people our age can do that. उसके बाद voice search optimization, जिसमें optimizing your website content to respond to voice search queries. I mean, this is interesting. This can be a new trend in Pakistan. आपकी voice search में अगर कोई queries आती हैं तो आप उसी के patterns recognize करके उनको respond करें. फिर artificial intelligence सब जैसे introduce हो रहा है. Chatbots and using AI and chatbots to provide personalized experiences for website visitors. Then virtual and augmented reality, VR, AR, using VR or AR audio reality to create immersive experiences for audiences. ये हो सकते हैं. उसके बाद ये कि हम अपनी सक्सेस कैसे मेजर करेंगे, हमारी
कैंपेन अगर हम पाकिस्तान में कोई सोशल मीडिया की करना चाहते हैं, उसकी वो सक्सेसफुल है या नहीं है, उसकी कुछ मैं देना चाहूँगी टिप्स। उसके ये हो सकते हैं कि आप अपना वेब ट्रैफिक देखो कि वो कितना आ जा रहा है उस आपकी स्ट्रेटेजी के बाद। कॉन्वर्जेशंस देखो कि ट्रैक द नंबर ऑफ लीड्स आप जितने जनरेट कर सकते हो, सेल्स जनरेट कर सकते हो। वेबसाइट के थ्रू एंगेजमेंट देखें कि आप लेवल ऑफ एंगेजमेंट कितना क्रिएट कर रहे हैं अपने वेबसाइट, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें कि आपको रिटर्न डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन से कितना हो रहा है। उसके साथ साथ क्योंकि आई एम शॉर्ट इन टाइम, आई हैव टू जंप इन अनदर मीटिंग एट 5, सो मैं आपको थोड़ा सा इस पे और ब्रीफ भी कर दूं कि जो पाकिस्तान के बेस्ट अगर सोशल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनकी हम बात करें, जो हम रिकमेंड कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगी यंगस्टर्स को भी और मिड लेवल करियर और सीनियर लेवल को भी, वो ये कि फेसबुक इज वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म with over 15 million active users in Pakistan. I mean, it can be used for progressing your business. You can do online selling of your clothes, of your brands. Then Instagram, with over 15 million active users in Pakistan, Instagram is a popular, tool platform for businesses to share virtual content. उसके बाद आप देखना चाहें तो Twitter, over 6 million active users in Pakistan है उसके, it's a platform जिसपे हम यूज कर सकते हैं अपने लीड जनरेट करने के लिए। लिंक्डइन इज अ वेरी स्पेसिफिक सोशल मीडिया, आई वुड से डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जो मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है पर्सनली फॉर बीइंग एन एचआर, बीइंग अ रिक्रूटर, being a T&D lead, being a public speaker. I think with over 6 million active users in Pakistan, LinkedIn is a popular platform for businesses to connect with other professionals and showcase their expertise. So I would sum up my discussion with this, and because I have to leave for another meeting, I'm grateful to Sumbul for inviting me over here, and I'm grateful to share the platform with Mr. Farooq and Hamad. Thank you so much for having Thank me, you. Sumbul. Thank you, Thank you. guys. Thank you, Nilofer. Very good to have you, and बहुत valid and बहुत I think कि focused किस्म का आपका जो है वो एक overview रहा है. So thank you very much for that. Appreciate you taking the time to join us today. And I think you've added a lot of value to the discussion from the HR perspective. Of course, you have a very good eye on what is happening in terms of human resource की जो हमारी digital में capacity है. And yes, absolutely endorse your views कि जो platforms हैं हमारे पास existing, they are there is still so much that needs to be explored with the outreach. मैंने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान is I think has been one of the कंट्रीज जहाँ पे इंटरनेट यूजर इतना रैपिडली ग्रो कर रहा है. एक साल में तकरीबन 4.5 मिलियन 4.4 4.5 मिलियन यूजर्स लास्ट ईयर in 1 year. Absolutely, yeah. That is just Thank you 1 so year much, adding Sumbul. up. So if you Thank you, look at guys, this, for your time. okay, thank you so much. Thank Thank you. अच्छा, इसमें जी, अच्छा जी. आई So वुड लाइक moving टू ऐड forward a फ्यू little bit, I'm थिंग्स. just going to अच्छा, जी जी जी, आप करें कंटिन्यू, कोई मसला नहीं. जी जी आप कैरी ऑन हमारा नो वरीज, आप बताइए. ओके, सो बड़ा अच्छा और बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है फारूक ने, स्ट्रेटजी वाला. अच्छा, फॉर अस, मैं जो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. सो आई थिंक जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है वो ऑब्वियसली यू कैन टीच समथिंग टू पीपल थ्रू इंस्टीट्यूट्स, जो आप कह रहे थे, बट a lot of it is it is evolved जब आप इसको करना स्टार्ट करते हैं और आपके पास फिर फीडबैक आता है और एनालिटिक्स आते हैं. एंड यू हैव टू चूज कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जैसे हम कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा एवेन्यूज हैं, सो आपने किस स्ट्रीम को चूज करना है. जैसे आप लिंक्डइन पे जाएंगे या पेड कैंपेन्स करेंगे. अच्छा, फिर व्हाट कैन बी टॉट इज वो ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं डेफिनेटली. जैसे आपने अगर ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स बेचनी है, तो उसका यूजर जो है वो लिंक्डइन के ऊपर नहीं बैठा, वो Correct. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बैठा हुआ. इसी तरह अगर आपने सर्विसेज बेचनी है, और से जैसे मेरी कंसल्टिंग सर्विसेज है, सो वी हैव मोर लीड्स कमिंग फ्रॉम लिंक्डइन रादर देन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. सही है. सो अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस. अच्छा, फिर ये कि you have to try and test. I worked with an IT company few years back, and और वो 7 साल से तकरीबन ना पेड कैंपेन्स कर रहे थे. एंड दे न्यू इन परसेंटेजेस, एक्चुअली न्यू इन परसेंटेजेस, कि हम इतना स्पेंड करेंगे, इतना चर्न होगा,
इतने क्लिक्स होंगे और इतनी सब्सक्रिप्शंस होंगी, और वो वैसे ही होता था। सो दे हैड लर्नड ओवर 7 years कि हमने हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम क्या स्पेंड करते हैं और किन प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड करते हैं तो हमें रिटर्न क्या मिलती है। सो आपने प्लेटफॉर्म्स कौन से चूज करने हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रीम्स कौन सी चूज करनी है, और आपके ऑब्वियसली यू हैव टू, यू आल्सो हैव टू मेक चॉइसेस फॉर द राइट टूल्स। जैसे फरूक सीआरएम की बात कर रहे थे, इसी तरह आप वेबसाइट के ऊपर अपने एनालिटिक्स देख सकते हैं। आपके जो आप सोशल मीडिया की पोस्ट लगा रहे हैं उसके साथ ट्रैकर्स आते हैं, वो आपको एनालिटिक्स बताते हैं। सो even एनालिटिक्स the के बगैर even तो the numbers के बगैर तो जी जी just adding here that even the current like, latest CRMs वो इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके सारे के सारे इन प्लेटफॉर्म्स के साथ, एंड दे गिव यू स्टैट्स इन वन प्लेस। So it's जी जी just not बिल्कुल। CRM के अंदर कस्टमर डेटा है, you can look at all these analytics and stats and all of that तो वी together. आर इंटरनली वी आर इंटरनली यूजिंग अ टूल जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट भी बिल्ड हो रही है और उसके अंदर सीआरएम भी है और उसी के अंदर हमारी सोशल मीडिया के टूल्स भी हैं। सो Correct. सोशल मीडिया के ऊपर से क्लिक करके कस्टमर हमारे पास आ सकता है, वो सीआरएम में फॉल करेगा, इसी तरह वो वेबसाइट से फॉर्म फिल करके आ सकता है या लाइव चैट के थ्रू आ सकता है। ऑल ऑफ देम विल फॉल इनटू द टू द मेन स्ट्रीम सीआरएम। Yeah. अच्छा, इसके साथ मैं आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपसे नेटसोल की हम बात करते हैं या आपकी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं। सो आई वांट टू नो कि आप लोग देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीम्स, मेरा ख्याल है कि 12-15 एवेन्यूज तो होंगे आपके डिजिटल मार्केटिंग के, और हर बंदा सारा कुछ नहीं कर रहा होता। तो आप लोग कहाँ कहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दैट? फॉर एग्जांपल मैं देखिए कहता हूँ मैं मैं मुझे मैं उसका मैं उसकी वैल्यू है मेरी सर्विस के लिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो जो इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस, बिकॉज आई वर्क एट नेटसोल, that does not allow me to share all the information with ओके everybody as well. ओके But I can talk about my personal experience, right? Not specifically the organization and strategies. So मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो एवेन्यूज जो वैल्यूएबल है, फॉर एग्जांपल सर्विसेज के लिए बहुत वैल्यूएबल एवेन्यू है, तीन बड़े एवेन्यूज हैं। और अगर आप एनालिटिक्स भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा, और उसके ऊपर फिर वो और बातें हैं, बहुत सारी की जा सकती हैं। नंबर वन इज वीडियो, राइट? either Twitch, either YouTube, right? Second is LinkedIn. Third is email, right? And then content, continuously engaging content creation is important. So ये चार चीजें तो आपने सबसे पहले करनी है, and then within that फिर आपको ये समझना है कि आपकी मार्केट क्या है, आपके एंड यूजर कौन है, उनका क्या साइज है, उनका क्या इंटरेस्ट है, तो होल कोहॉर्ट की सिलेक्शन, आर द डिसीजन मेकर्स, आर द कंट्रीब्यूटर। सो उसके बाद फिर आप आते हैं इस चीज के ऊपर कि आपकी मैसेजिंग उन लोगों को क्या है, बल्कि आप इनफैक्ट स्टार्ट ही वहां से करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, और ये एक होता ये है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल टेक्निकल प्लानिंग हो रही होती है हर एक चीज के बारे में। यार ये मैसेज है, ये बूस्ट कर दो, पोस्ट कर दो, एडवर्टाइज कर दो लिंक्डइन के ऊपर, ये फेसबुक पे कर दो। फोकस बहुत टेक्निकल चीजों के ऊपर है। सो फ्रॉम दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू build a strategy, connect some analytics, see what is happening and change, right? हम Maslan, फीडबैक लेकर आए nobody, हैं। no, we can, for example, we want to, I would suggest you to run A and B testing, right? To create एक ही message के ऊपर दो different campaigns in two different ways and see what the results are, and then improve on it, right? और ये continuous exercise है, so you need one person focusing on this and seeing the results on the daily basis and directing the team, right? That is where the role of the CMO who has seen the results of these. अब पेपर क्लिक की तो बात करते हैं, पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एक्विजिशन की बात नहीं करते हम लोग। मैंने अभी तक किसी को मेंशन करते हुए नहीं देखा कि हम लोगों की पर कस्टमर एक्विजिशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल मार्केटिंग है क्या? Is it $16 per user? Is it $20? Right? What the return is, right? और $30 हम कहते हैं कि यार इतने डॉलर हमें खर्च करने हैं, इतने क्लिक्स आने चाहिए, बट ओवरऑल रिजल्ट क्या है उसका फॉर कस्टमर एक्विजिशन, वो आपको आएगा जब आप इंटीग्रेटेड तरीके से इन सारी चीजों को एज
but the topic was digital marketing strategy वो चलाएंगे. And that is where you will start to see results. And I think the gap is definitely present over there. If you see um, how our uh, organizations are represented generally, तो वहाँ पे आई थिंक गैप नजर आएगा और वो ओरिजिनेट करता है इस वजह से skills की बहुत शदीद कमी है. It's like you are learning and you're doing, learning and you're doing continuously. So you're making a lot of mistakes, which reduce the overall impact of your overall digital marketing campaigns as well. So I think there's a lot that we can do here. There's a big gap. हाँ, आप बात कर रहे थे. I'm going to pick up from where आपने बात करी about analytics. आपने CRM की बात की कि आप किस तरह से integrate करते हैं. Yes, so I can, as an employer, I can give you my experience, or as somebody who's managing a marketing team as well. But लेकिन हमारा क्योंकि field is entirely different, so it's academia, higher education, further education. So जो scope मेरा है वो that would be entirely very very different to somebody who's running a service-based business or a product-based business otherwise. Although we fall under services as well. Like in data analytics, I think is where you've touched upon, and that is something that again comes. It's a first step for digital marketing. पहले आपकी data analytics होंगे तो आप उसके बाद then you can recalibrate और अपनी आप digital strategy उसके हिसाब से बना सकते हैं. So I think उस marketing से पहले हमें जो है वो analytics पे आने की जरूरत है. Business intelligence is something that we now need to look at and promote as well. Even आपके बहुत छोटे-छोटे businesses हैं. फरूख साहब बात कर रहे थे कि आपने वीडियो से बात की कि वीडियो मार्केटिंग व्हाट इज रेलेवेंट, यूट्यूब है और उसके बाद फिर लिंक्डइन है. इफ आई लुक एट इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव तो हमारे लिए यूट्यूब यस, बट इवन बिफोर यूट्यूब आई वुड पुट इंस्टा फर्स्ट, बिकॉज मेरा डेमोग्राफिक है 5 से लेके 24-25 साल का यूथ. उनके लिए फेसबुक इज ऑब्सोलीट, लिंक्डइन इज सीरियस. पाकिस्तान में अभी उस तरह से बच्चों का माइंडसेट नहीं है कि LinkedIn is popularly used. The other thing I was looking at in the last few months कि China जो है वो अपने education institutions के लिए TikTok use कर रहा है. Yes. But the bigger advantage is कि उन्होंने उसके parameters set खुद कर दिए हैं, उसका control अपने पास है उनके, the whatever regulatory authority, तो उस पे सारा बाकी content नहीं है, but they are using it to teach and upskill people. TikTok पे जो है वो trainings चल रही हैं. And that is something that again, I think Pakistan can benefit. I'm sure Pakistan influencers market में TikTok का बड़ा नाम है internationally. They say if you're not on TikTok, you do not exist as a brand. Brand recognition में बहुत important है. So you're right. Okay, हर एक Instagram बड़ा effective है, but for us maybe not. But for a good number of people, Instagram is very important. For example, मेरे ख्याल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि ब्रांड एस्टैब्लिश हैं. देखें आप एक जेनेरिक स्ट्रेटजी तो अपनी सर्विस की बेस पे या अपनी मार्केट या अपनी जो आपकी टारगेट मार्केट है उसकी बेस पे और अपने इंस्टीट्यूट की वैल्यूज की बेस पे आप एक जेनेरिक स्ट्रेटजी तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप कर सकते हैं. लेकिन वही फरूख साहब वाली बात के ओवर टाइम इट हैज़ टू इवॉल्व और आपके पास कंटिन्यूस फीडबैक उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा, यू नो, टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट एंड टू स्टिल बी इन बिजनेस एंड बी जनरेटिंग लीड्स एंड एंगेजिंग योर कस्टमर्स. और अगर मैं अपनी एग्जांपल शेयर करूं तो हमने 6 महीने वी ट्राइड एंड टेस्टेड डिफरेंट थिंग्स और अब वी हैव जस्ट लॉन्च्ड a 1 year scheduled campaign for our services on 4 different platforms with the content, with the design और LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook सारी जगहों के ऊपर वो जा रहे हैं और they are all scheduled for 1 year. और ऑब्वियसली उसके साथ एनालिटिक्स आ रहे हैं एंड यू नो वी विल कीप. अब आज ही आई वाज लुकिंग के जुरिसडिक्शंस की बेस पे हाउ मेनी क्लिक्स आर फ्रॉम यूएसए, हाउ मेनी क्लिक्स आर फ्रॉम बेल्जियम. सो जो फॉरेन कंट्रीज की ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है पाकिस्तान के निस्बत उसके ऊपर.
सो और But ऑब्वियसली out कोई भी of curiosity, कोई भी उसको हम आपका काम है, calibrate उसको कैसे यू हैव टू करेंगे? कंटिन्यूसली मेक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स इन इट। वो डिजिटल मार्केटिंग है या आपके ऑपरेशंस है या कोई और चीज है, और एक इट और हैज टू इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इन्होंने कहा कि एक साल एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि दे प्लान इट वेरी फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज यू कैन नॉट स्टार्ट इट एंड स्टॉप इट, राइट? So you start to lose that momentum and interest of the people who want जी to बिल्कुल बिल्कुल। continuously see new content coming in. So it's not कि अच्छा इसमें मैं intermittently कभी कभी ads चला दिए, कभी बंद कर दिए, so जी you जी have जी to जी keep your audience engaged all the time. जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा इसमें लोग डिफरेंट And I स्ट्रेटजी think शेयर जितना करते हैं। अच्छा information अब हमारी influx है, सर्विस तो brand visibility खत्म हो जाती है अगर आपकी brand consistently visible ना हो। अब on digital platforms, I think you lose out because there is so much of information flux from everywhere, हर जी जी domain में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमद आपसे मैं तो वो just वही out of curiosity, so आप जी जी recalibrate कैसे करेंगे अपनी, अगर if you have such a long term या plan, मैं so मैं how इसकी do तरफ आ रहा था। सो एंड मैं जिसको भी जाके बताता हूँ ना, सो उन सबका ये क्वेश्चन होता है आपके वाला कि एक साल का टर्म बहुत लंबा है, सो हाउ वुड यू रिकैलिब्रेट इट, एवरीबॉडी आस्क्स दिस। सो हमारी जो okay, सर्विस है या जो हमारी कैंपेन्स हैं, वो जो जो हमने साल वाली प्लान की हुई है ना, वो हमने रखी ही इतनी जेनेरिक है। फॉर एग्जांपल वी से मैं सेल्स नहीं कर रहा यहाँ बैठ के, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। सो वी से कि हम आपके लिए फॉर एग्जांपल विल मैनेज योर टैक्सेस, उस जो डिजाइन है उसकी टैगलाइन सिर्फ इतनी है, या वी विल मैनेज योर बुक्स, या इम्प्लीमेंट एन ईआरपी सॉल्यूशन। और ये ऐसी चीज है मेरे लिए या हमारे बिजनेस के लिए, ये ऐसी चीज है जो एक साल क्या अगले मेरा ख्याल 5-6 साल में भी ऐसी चलनी है। six, यस बट आज आज मेरी एक इंस्टीट्यूट से बात हो रही थी, एक दोस्त है जिनका अपना कॉलेज है, सो आपके वाली फील्ड में है। सो उनसे बात हो रही थी, तो वो मैं उनसे कह रहा था कि यार ये इस तरह से हम रन कर रहे हैं। तो वो कह रहा था कि यार हमारा तो ना मैंने कहा तुम लोगों के तो कोर्सेज होते होंगे ना क्वार्टरली या 6 मंथली सेमेस्टर्स होते हैं, तो तुम लोगों को उस पॉइंट इन टाइम पे जाके फिर दोबारा वो करना पड़ेगा। सो बहरहाल उसमें ये है कि आपको वो एक दफ़ा दोबारा अपनी एफर्ट करनी पड़ेगी। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, आप उसके लिए कर सकते हैं कि आप पहले से प्लान कर लें, अपना कंटेंट पहले तैयार करके रखें। और देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स अब मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं, जो एक सिंगल टूल से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो सारे एनालिटिक्स भी आपके पास लेकर आता है। एआई को आप मे- लेवरेज मेरा मे, कंटेंट की मेरा क्रिएशन में, मेरा डिजाइन की क्रिएशन में। जी जी मेरा तो प्लान है कि मैं ऑटो जीपीटी को ट्राई करूं टू क्रिएट अ सीएमओ फॉर माय सेल्फ, देखेंगे कितना कामयाब होता है। सो मे बी दैट वर्क्स आउट। अच्छा सो जो अब मेरा ये it's प्लान है कि पहले जो है ना वो ये डिजाइन्स की फाइनलाइजेशन पे और कंटेंट पे, सो मेरा अपना पर्सनल 30 to 45 मिनट्स डेली के लगते थे। उसके बाद वी ट्राइड इट फॉर अ मंथ कि हम स्केजुलिंग करें, फिर वी ट्राइड फॉर 3 मंथ्स। और अच्छा, और जो 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 आप वो इम्प्रेशंस की बात है या एंगेजमेंट्स की बात है, सो जब हमने हमारे पास बीच में ना रमजान के बाद 1 महीने का गैप आया, ठीक है, एंड वी हैव अ 40 to 50% ड्रॉप इन दी इम्प्रेशंस। अब जब हमने दोबारा शुरू किया है, सो अब हमें 50% दोबारा रीगेन करना पड़ेगा, जस्ट 1 महीने के ड्रॉप से। और डिजिटल मार्केटिंग में खासतौर पे जो पेड कैंपेन्स हैं, उसमें तो एन एक्सपर्ट वही ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका 7-8 साल का एक्सपीरियंस था इसके अंदर, दे यूज्ड टू से कि आपने आज जो एड स्पेंड किया ना, उसका रिजल्ट आपको 3 महीने के 2 से 3 महीने के बाद नजर आना शुरू होता। सो यू हैव टू कीप डूइंग इट, यू हैव टू कीप डूइंग इट। अच्छा मैं अपना ये शेयर कर रहा था कि ब्रांड नाउ रिकग्निशन आई एम बड़ी फ्री जरूरी फ्रॉम है। दिस साइड, नाउ वी आर फ्री फ्रॉम दिस साइड। सो अब हमारा ये प्लान है कि अब हम ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स करेंगे, और क्या कहते हैं वीडियो का कंटेंट जो है वो अब उसकी तरफ आएंगे। सो बिकॉज अगर मैं पर्सनली देखूं तो मेरे तकरीबन कोई 2 to 250 आवर्स जो है ना वो साल के सेव हो गए हैं, ये इस एक एक्सरसाइज की वजह से। absolutely. आप AI की बात कर रहे हो सब, I think that's also a very very big क्या कहते हैं opportunity to now get मेजर into that चेंज world. आई थिंक कि कुछ इवेंट्स हमारी जिंदगी में ऐसे हुए या पिछलों की जिंदगी में ऐसे दैट चेंज द वे वी लिव, राइट? आई थिंक दैट इज द साइज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एआई राइट नाउ। जी बिल्कुल बिल्कुल। इट चेंजेस द वे वी लिव। सो अगर वो इतना बड़ा इम्पैक्ट है तो वी नीड टू स्टार्ट I एक्सप्लोरिंग एज agree, टू and I हाउ टू think it's लीवरेज दैट। wonderful to इट्स टू बिग कि ये खतरनाक लगने लग गया है। आई डोंट नो खतरनाक है कि नहीं है, बट ये है कि यू नो it इट्स is इट्स it इट्स is समथिंग, इट्स अ dangerously टूल good. दैट
it is the good, and it's a tool that you know, it can help you do, utilize that positively. Some people जी will ये तो not. I mean, मतलब like मतलब जैसे hard everything else, right? उसको harness इसको जो करना It's like एथिक्स we है पड़ेगा. वो haven't. कहते हैं कि आप गन का Uh, पॉजिटिव और नेगेटिव यूज दोनों कर सकते हैं जी बिल्कुल it's like we haven't lost our legs after invention of horses, or use of horses and invention of cars अभी तक तो. So AI के साथ भी मेरे ख्याल है कुछ hype बहुत ज्यादा है, but I think it's more about how we utilize it. हाँ, वो एक नहीं, I और think देखो सिनेरियो है, वो फिर इतना कभी ही बड़ा हो. कभी ऑफलाइन बात हो सकती है उसके ऊपर. इसके अंदर AI trains AI, and it नहीं, becomes a story of metrics and वैसे I I do not personally think think there it's are a so matter and of many. time and the amount of Sorry, data I think मेरी आवाज लैग हो रही uh, है. I was just saying marketing पे there are so many people. अगर आपने देखा होगा, because Twitter is also becoming an academy. It has so इतने लोग हैं who are training marketers how to use AI and start doing things that they would probably do as you said कि घंटों लगा के आप जो काम कर रहे हैं, that is image generation आपके पास हो रही है, content generation आपके पास AI के through हो रही है, and as you said, defining the campaign, setting the parameters for the campaign, ये सब AI करके दे रहा है आपको. But how to use अच्छा that अभी is something I think that's गूगल ने रिसेंटली गूगल एड्स के अंदर एआई इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर आप उसको इमेज देंगे और वो रिलेटेड इमेजेस खुद ही प्रोड्यूस करके आपकी एड्स की कैंपेन चलाएगा. जी, I was just बिल्कुल. watching the video yesterday. ये Google no, Bard, it's something ChatGPT और yeah, so you have to adopt this. इसके Obviously, अलावा कोई obviously. रास्ता नहीं है. जी जी बिल्कुल एडॉप्शन के बिल्कुल अलावा रास्ता कोई नहीं है. जितनी बिल्कुल जल्दी ऐसे कर ही है. लेंगे उतना अच्छा है. ये ऐसे ही है जैसे अब if somebody writes a letter, prints it and send it to someone, तो आप उसको कहेंगे यार तुम ईमेल क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप क्यों नहीं कर रहे हैं. So this is what you will be saying about true. AI in few years. Yeah. Right. I think Absolutely. we are going to now come to concluding the session for today. It's been an absolute pleasure talking to you. बहुत सारे हमने avenues, बहुत थोड़े से time में I think काफी सारी चीजों पे जो है we explored, थोड़ा थोड़ा हमने कुछ चीजों पे जो है वो बहुत focused बात की. Very valuable input from all of you. एंड आई थिंक ये बहुत लंबी डिबेट हो सकती है. बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो ऑफ टेंजेंट बात की जो कि रेलिवेंट हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की बेसिस बन सकती हैं. एंड देन हम जैसे बात कर रहे थे अबाउट डेटा एनालिटिक्स एंड देन from data analytics to digital marketing to AI in digital marketing. So I think it's been a fruitful discussion, and absolutely grateful to both of you for your time and the very candid and the very on point information that you shared. Or any closing notes from both of you? Farooq sahab, aap batayega, and then हम also go to you. Any closing notes from you? Thank you so much for having me. और मेरे लिए बड़ी इसमें जो डिस्कशन हुई है उसमें there are a lot of things I have learned from all of you and your experiences. I would say That's the thanks to intention. CxO You're welcome. for arranging this, hosting the fantastic event. I think a बहुत ही precise discussion हुई है. एक point ऐसा है where we can have an hours and hours of discussion, but that was not the जी बिल्कुल point. Point was to actually talk about important things in the shortest amount of time possible. That I think we have successfully done, thanks to you जी and सुमल for एक एक moderating the एक event. मेरी रिक्वेस्ट है टू दी फॉरम. वो ये है कि और वो भी इसी डिस्कशन से निकली है बात के जो स्किल्स का इतना बड़ा गैप है मार्केट के अंदर. एंड आई रियली वांट कि हमारे पास जो हमारी जनरेशन है अगली और जो स्टूडेंट्स हैं वो दे शुड बी स्किल्ड. व्हाई नॉट. सो मे बी वी कैन सम टाइम डिस्कस कि उसकी क्या क्या एवेन्यूज उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से गैप्स हैं और There could be किस तरह learning से हम अपने जो opportunities. जो 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 स्टूडेंट्स हैं और जो जनरेशन है उनको किस तरह स्किल्ड कर सकते हैं. Jiska, I think my 2 cents would be the word I have for as a solution is the collaborations. 21st century skills की हमने बात करनी शुरू
की थी इन academia आज से कुछ सालों पहले. So collaboration, communication, the critical thinking. So I think that is where we will find solution. It has to be, मैंने शुरू में भी बात की थी, industry, academia plus the public-private collaborations. So hopefully जितनी हम बात कर रहे हैं, it will fall on other ears as well, and other people will be inspired to look at some solutions as well. Because discussion का मकसद यही है. CxO has taken this initiative, and I'm sure हम सबका individual input भी यही है. Let's talk about things that need addressing और फिर उनके हल निकाले जाएं. So hopefully this will lead So to bigger I conversations. was requesting to have a webinar or a discussion on this topic. Skills gap. Absolutely, point taken. Skills gap. We can do that. I would be very happy because I'm working on that. जी. लर्निंग एवेन्यूज के बारे में बात की सकती हैं. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. जी. और अच्छा अभी मेरे पास थोड़ा सा कुछ colleagues हैं और बहुत फोकस है. जी जी. Some people have approached me and asked के बच्चे ने सी एंटर कर लिया या एसीसी कर लिया, अच्छा वो अब क्या करे ना. और कैन यू बिलीव बच्चों को ये नहीं पता कि कैनवा कोई टूल है, चैट जीपीटी कोई टूल है, लिंक्डइन के ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनानी है. पीपल डोंट नो. मतलब एंड मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, को क्विक बुक्स का नहीं पता. सो बताने वाले भी नहीं है. सो सीखना तो बात की बात है, शायद उनको पता ही लग जाए तो वो खुद ही अपनी कोई मेहनत करके सीखना शुरू करता है, सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करता है. नहीं, एब्सोल्युटली राइट. नहीं, बिल्कुल एवेन्यूज बताने चाहिए जी, बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह. लेट्स डू दैट सम टाइम. and there should also be exercise के जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आप हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूँ, we should go and talk to students in universities and colleges. बच्चों की करियर काउंसलिंग नहीं हो रही हमारे. जी, मेंटरिंग की बहुत जरूरत है. बिल्कुल, यू आर वेरी राइट. और मेंटर्स वो जिन्होंने who've learned through experience, people like you, आप लोग सब जो हैं वो अपने फारूक साहब has been talking about collaborations की अगर हम बात करें, सो मैंने अभी तक I have approached 2-3 universities for a program on ERP and people are not willing to do it. Universities की I don't know अपनी insecurities हैं institutes की, they do not want to do it. Free में भी नहीं करना चाहता. I think let's generate the demand and then they will adjust to that. Let's जैसे product की generate होती है पहले demand, I think let's try and generate the demand for the skills and make people more aware कि ये सारी skills internationally locally useful हैं, and then institutes will follow that, right, that demand. Rightly said, sir. Absolutely. Rightly pointed. Awareness और फिर क्या कहते हैं initiatives. That's the plan. Yeah. That's how it should be. Thank you so much. We'll now close the session. Once again, grateful for your input and your thoughts and all of the information that you've shared with all of the peers today. Inshallah, we'll be getting hold of you again for such further discussions. Thank you to all the panelists that were here. It was a wonderful discussion. Thank you. जी, thank you so much जी. Thank you so much everyone. Okay जी, Allah Hafiz. Walaikum Assalam.